Welcome again. We are in the series of lectures regarding organic evolution. This is your lecture number 4 of the series. So beta, organic evolution में चेस कैंसर concept पे काट करन previous lectures में करिए काट regarding industrial melanism. आज चेस first of all काट करें about a phenomenon of organic evolution. This is called adaptive radiation. Go first of all चाहे basic evolutionary concept aspect काट करें आप evolutionary concept चेस बना adaptive radiation. Beta, adaptive radiation is also called very simple phenomenon. It is also called divergent evolution. Divergent evolution. What's the good? Ashi pata ki during the course of organic evolution, a ancestral species se divan rise to another species. A ancestral species in the changed environment get some adaptations over the period of time. These changes accumulate, these changes pass from one generation to another generation, and with the result, a daughter species is formed. Amela basically phenomenon akye organic evolutionist baze gasan kam ak ancestral species se divan rise to multiple species. Yem sat ekis parental species pethe variya naya species paida gasan. Yeli ekis ancestral species evolution gaise magar variyahan direction mans gaise evolution. That kind of evolution is called adaptive radiation, or that kind of evolution is called divergent evolution. So divergent evolution is an evolutionary phenomenon in which an ancestral species gives rise to multiple daughter species. For example, let me cite the examples for first example for what we call it as adaptive radiation. Take the case of mammals. Let's remove mammal case. Mammals. Beta, ashi pata ki yan pet ki zameen bane, yan pet living organisms create gai, tan pet Winston use time chu. Ye time chu geologist of the geographist of divide kurmut by means of a time scale that is called a geological time scale. या जमीन वुनिस्तान यन पे जमीन बने तन पे वुनिस्तान युस जमान युस वक्त छु गुजरमुत सु वक्त छु जियोलॉजिकल टाइम स्केलन अलग अलग एराजन मंस डिवाइड करमुत एराज छु पत डिवाइड अमित करने इनटू इपोक्स छु पत डिवाइड अमित करने इनटू पीरियड्स अलग अलग पीरियड मंस अलग अलग इपोक्सन मंस छु ओसमुत जमीनस पे अलग अलग ऑर्गेनिज्मन हिंस हुकुमरानी consequently ये कथ छि यवान मानने कि दपान mammals हसा गई अकिस जमानस मंस पैदा तात जमानस वनान Cretaceous period. Cretaceous period मंस गई mammals पैदा यम साथ mammals गई पैदा तम साथ जमीनस पे हुकुमरानी अम बताओ Jurassic period जमीनस पे हुकुमरानी तम साथ huge reptile हिंस बड़न reptile हिंस हुकुमरानी या जमीनस पे बड़ रेप्टाइल्स तम वक्त बसान तिमन वन डायनासॉर्स जुरासिक पीरियडस मज तिम मतलब पन्निस पीकस पे तथ जमानस मज डायनासॉर्स एक्सप्लॉइट करन प्रथ कुन किस्मुक हैबिटेट क्या डायनासॉर्स आबस मज रोजान क्या खुशकस पे रोजान इवन सम ऑफ देम वर फ्लाइंग डायनासॉर्स क्या कार्निवोरस क्या ओमनिवोरस क्या हर्बिवोरस huge reptiles, these reptiles were dinosaurs. Ach zamanas man ch mammals paida gay. Consequently, dapan yem sat mammals gay paida. Yutri mammals paida gay, dapan godnik mammals hasa as rat-like organisms. Lakit makit gagadasum organisms, ant eaters, etc. As godnik mammals. Tikaz tam sat as zaminas pe huge dinosaur an his hukumat. Consequently, ये mammals ने हेकान तम साथ वाश करित के यम ने हेकान तिमन डायनासोरन से compete करित के Consequently, यम गोटनिक mammals तिम वारिया लॉकट जानवर they lived a secretive life. Secretive life गो मतलब तिम हुमन डायनासोरन निश रोजान खटित
इत पे मसलन कह गर अगर अत गरस मज गगुर आस यह गगुर इंसान निश लिव करान सेक्रेटिव लाइफ यह गगुर अमिस मतलब जबरदस्त कोशिश आसान कि मे गस इंसान हिंज नजर पे इथे पे तम वक्त मैमल्स तिम रैट लाइक ऑर्गेनिजम्स लकट लकट मैमल्स इंसेक्टिवोरस इंसेक्ट्स खेवान तो यम लिव करान सेक्रेटिव लाइफ तिकाज यम हेकान न ह्यूज डायनासोरन हुंद मुकाबला करित केन अम पत ये डायनासोरस एक्सटिंक्ट गई ये जमीनस पे डायनासोरन हुंद खात्म गो नमन मैमलन आव मौके वाश कड़नुक मैमलन आव वाश कड़नुक मौके तो युस एंसेस्ट्रल रैट लाइक मैमल अमिस आव मौके जमीन पे और योर फेरनुक थोरनुक तो कॉन्सिक्वेंटली अहंद यम ऑफ स्प्रिंग तिम गई इवल्यूट इन सेवरल डायरेक्शंस मसलन कि यमन ऑफ स्प्रिंग गई मतलब लिम्सन मज मॉडिफिकेशन यम अहंद ऑफ स्प्रिंगस कैंसो कर पन लिम्स इस्तेमाल फॉर डिगिंग खन खतर वार 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 तिमई पे बने फसोरियल एनिमल्स फसोरियल मैमल्स गई तिम यम वंकस वाजन मज रोजान मसलन मोल रैबिट रैट गो अमसी एंसेस्ट्रल मैमल्स पे बने क्या मैमल्स दीज वर फसोरियल अमसी एंसेस्ट्रल मैमल्स पे बने क्या मैमल्स तिम यम जन फास्ट रनर्स बने ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ दीज बिकेम cursorial mammals those which use their limbs in fast running on the surface of the earth like horse deer baki animals ancestral mammals offspring mans gay kya adapt timo lay kul exploit karin timo log kulyan pe rozun karin timo kai panin tihin limbs bani prehensile timo lay panyo limbs su kulyan his lange rakne baki cheez तमिक मतलब गो अमसी एंसेस्ट्रल मैमल्स पे गई क्या मैमल्स पद यम जन आर्बोरियल यमो कुल कर इस्तेमाल फॉर देयर मीडियम ऑफ एक्टिविटी इथे पे क्या मैमल्स हसा गई अमसी एंसेस्ट्रल मैमल पे बने क्या मैमल्स तिम गई अडॉप्ट टू लिव इन द वाटर सो तिम गई सेकेंडरली मूव वापस गई तिम आबस मज तक बने एक्वाटिक मैमल्स लाइक व्हेल लाइक सील अमसी एंसेस्ट्रल मैमलो पे गई कैंसो मैमलो पानी तिहिन लिम्स गई मॉडिफाई इनटू विंग्स तिमन बने वोलेंट मैमल्स लाइक बैट टीरोडैक्टाइल वोलेंट मैमल्स तमिक मतलब इट इज बिलीव्ड इन द इवोल्यूशन दैट एंसेस्ट्रल यूस रैट लाइक मैमलोस यूस लकुट मकुट मैमलोस तमिस हसा गई इवोल्यूशन इन सेवरल डायरेक्शंस तमिस रैट लाइक मैमल्स पे गई फसोरियल मैमल्स पद burrowing mammals पद तमसी पे गए cursorial पद तमसी पे गए arboreal पद तमसी पे गए aquatic पद तमसी पे गए volant mammals पद so अकिस ancestral species पे बने multiple daughter species because अमिस ancestral species गए वारिहन direction in mans evolution this phenomenon is called as divergent evolution or this phenomenon is called as adaptive radiation let us take another example for adaptive radiation or for divergent evolution. Another example for divergent evolution. Yet another example for divergent evolution comes from the Darwin's theory, from Darwin's book. तो ऐसा पता कि डार्विनन हसा को सफर एकस समंदरी जहाजस में तथ नाव HMS Beagle. HMS Beagle कर वर्ल्ड वॉयेज towards north coast of America. The north coast of America means what here towards the Galapagos Islands. Yokun thai sa gobar dhyan. Talking about Galapagos Islands. Galapagos Islands. You see Galapagos Island show asmut America kis north asmut show asmut a huge island. That huge island is wanan Galapagos Island. Island, as is evident from the word island, that it was a huge piece of land surrounded on all sides by sea. दबा अन पर छ जमीनस पे एक वक्त गमस कम अथ आइलैंडस पे है वारिया ऑर्गेनिजम्स बसान तो अथ आइलैंडस पे है फिंचेस दे बसान. Consequently,
Darwin could keenly observe birds called finches. And but hasa gay geographical change Galapagos Island. Turkin gay tectonic movements of plates. Galapagos Islands yim मतलब आज जमीनस तालकन यम अर्थ तालकन टेक्टोनिक प्लेट्स तिमन टेक्टोनिक प्लेटन गई मूवमेंट consequently ये पैरेंटल गालापैगस आइलैंड गो सेपरेट या ये गो डिवाइड इनटू मल्टीपल आइलैंड्स हिस्ट्री च मनन गालापैगस आइलैंड्स हसा गई टेक्टोनिक मूवमेंट ऑफ प्लेट्स या स गो बाइफरकेट अकि वक्त ये गो वारियाहन टुकरन मज तब्दील Consequently, ये साथ ये वारियाहन टुकरन मज गो तब्दील यम टुकर गई सेपरेट अकिस by huge distance of sea मंजबाग गो समंदर यमन टुकरन तमिक मतलब गो अकिस पैरेंटल गालापैगस आइलैंड्स बने मल्टीपल गालापैगस आइलैंड्स ये साथ ये मल्टीपल गालापैगस आइलैंड्स आसन बने में नतीजा ये द्रामुत कि यमन गालापैगस आइलैंडन आसे अलग लॉन्गिट्यूड यमन आसे अलग लैटिट्यूड ये साथ लॉन्गिट्यूड द लैटिट्यूड आसे अलग अलग ऑटोमेटिकली एनवायरमेंटल कंडीशंस आसन अलग टेम्परेचर आसे अलग अलग आइलैंडन मज रूदमुत अलग अलग रेनफॉल आसे अलग अलग आइलैंडन मज रूदमुत अलग अलग ह्यूमिडिटी विंड बाकी एनवायरमेंटल फैक्टर्स तिम आसन अलग अलग आइलैंडन मज अलग अलग Consequently, yem साथ ancestral Galapagos Islands आसी bifurcation गमस into multiple islands. यम after finches आस बसान प्रत कंस islands आसी आमुत हिस्स panun lot of birds या panun lot of finches. Now look here. यम finches शे तमिक मतलब को Galapagos Island हिंद finches यम Darwin keenly observe करे. Yim finches hasa asli taluk thavan to the same single ancestral species of finches that lived in the ancestral Galapagos Island. Magar tikyaz yim finches gay subjected to different environmental conditions. Timo different environmental conditions tho yiman island mans different kind of food available. Maslan ka island asya tuth yath mans matlab fruits asan zyada. Consequently, तकन फिंचन पेमुत फ्रूट्सन पे गुजार कर का आइलैंड आसा तुत ये ग्रासलैंड्स आसान ज्यादा ग्रेन्स आसान ज्यादा तकन फिंचन पेमुत ग्रेन्सन पे गुजार कर के आइलैंड्स आसान तिम यथ मज युजन बैरन आसा नासान फ्रूट्स नासा वेजिटेशन का बिकॉज ऑफ द डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस तकन फिंचन आसा आबस मज इंसेक्ट्स एटसेट्रा तिमन पे गुजार कर पेमुत So over a period of time, Darwin could observe कि यमन फिंचन हिंदिस beak structures मज हसा छु जबरदस्त मतलब difference. Darwin यम साथ pure Galapagos Islander. English आकि species फिंचन हिंस. मगर what was he startled with? He was startled with different beak structures, different feeding habits. For example, यथ islanders मज finches आसान fruitan पे गुजार करन. तिमन आइलैंडन मज यम फिंचेस आस तिमन हसा आस कर्वड बीक तिमन हसा आस तोंत कर्वड मसलन फ्रूगिवरस बर्ड्स छ पैरट छ फ्रूगिवरस बर्ड ये छ फ्रूटन पे गुजार करन अछ वछन फ्रूगिवरस बर्ड्स फ्रूट ईटिंग बर्ड्स तिमन छ आसान कर्वड तोंत तात बरकस यम ग्रेन्सन पे आस फिंचेस गुजार करन तिहिंस बीक आस पॉइंटेड तात बरकस यम आब मज इंसेक्ट्स आसान फीड करन इंसेक्टन पे आसान फीड करन तिहिंस बीक आसे बतकसिन पर बिल्ड लॉन्ग द फ्लैट इथे पर यम वुडस एक्सेट्रा पे गुजार आसान करन तिमन फिंचन हिंस बीक आसे लॉन्ग द पॉइंटेड सो कॉन्सिक्वेंटली तमिक मतलब गो बीक स्ट्रक्चर ऑफ द फिंचेस हैज अ गो चेंज Either part go class structure of the finches they change in these islands. The automatically yet ancestral species paired by name multiple daughter species. We guess hackle nice when it is sorry finches species से ताल्लुक थवन अलग अलग Galapagos Island and finches करो के treat as different species. मगर ये different species चे तब से parental ancestral species paired by name. So this is evolution in several directions. Lihaza yim Darwin's finches
Darwin's finches are a striking example for adaptive radiation. They are a striking example for evolution in several directions. Third example of adaptive radiation. Third example of adaptive radiation is that of marsupials. Now look here. Now look here. Mammals, so far as class Mammalia is concerned, class Mammalia. Class Mammalia used to, it has been divided into three subclasses. Actually, pata ki mammals gay them animals that lactate their young ones. Yim panyan bachan chu dod devan. You see, class Mammalia chu achi tre subclasses amit panam. Number first subclass is called Prototheria. Prototheria. Number second subclass is called Metatheria. Metatheria. Number third subclass is called Eutheria. Class Mammalia has been divided. We are talking about third example for adaptive radiation or divergent evolution. Let you take the class Mammalia. Class Mammalia has been further divided into three subclasses. Number first is Prototheria, number second is Metatheria, number third is Eutheria. So far as Prototheria are concerned, yah mammals even like platypus that are egg laying. Yim chi tool trawa. Yim mammals tool chi trawa. Timan mammalan chesmanan Prototheria. So far as Metatheria are concerned, they are also called marsupials. Marsupials gay tim mammals yiman chu abdominal cavity mas particularly female abdominal cavity mas pouch akasan. Tah pouches chesmana marsupial. Yet part kangaroo was chasan su pouch chandahu abdominal cavity mas tah chesmana marsupial. Marsupium because of the presence of marsupium, these are called as marsupials. Noman mammalan ch khususiyat yim ch tool trawan ken balki yim ch viviparous yim ch panyan bachan devan janam magar yiman mammalan ch ye peculiarity ki noman ch sari development gasan axon mas Prototheria. Noman mammalan kya ch gasan kam yiman ch half of the embryonic development gasan maj his uterus. And but you bachi zevan suchun completely developed asan ke then bachan chasan half of the embryonic span kormut cover. Tamik matlab go bunchasan then adi embryogenesis cover karmas. Adi embryology cover karmas pachu bach zevan. Tam matlab go pure well formed bachun zevan ke. Advite chu bach zevan ye bach yuthi zav ye chu pevan marsupium. And but this marsupium pe directly connection asa maj his uterus so the further development this marsupium mas gasan. Ad barakas yim Eutheria chu naman chais manan byak na placental mammals. Yiman chu uterus mas bazat placenta banan placenta through chu moj divan nutrition to the developing child the full formed baby chizavan. Bursa gobur be chu thavan byak. Even three subclasses, this classification is based upon the development. Mammalan three subclasses, this classification is based upon the development. Agar Prototheria egg laying mammals, yiman sorry development gasante thulus mans, yiman hindan bachan, that means outside the mother's body. Metatheria gay marsupials, yiman nasab development gasa maj hindis uterus mans, nasab development gasa marsupium mas. Eutheria ch placental mammals. Yiman ch sorry development gasa maj his uterus mans the full formed baby ch. Consequently, one is cut regarding adaptive radiation in the marsupial mammals. Yimasana marsupial mammals ch dapan yimasa gay godnyat pad in North America. Godnyat hasa gay pad in North America. North America's marsupials gay pad, Gothic marsupials, they are believed to have produced from North America. The North America migrate to South America. Marsupial and his ancestors gay actually pad in North America
तक पे गई माइग्रेट टू साउथ अमेरिका मगर नॉर्थ अमेरिका तो साउथ अमेरिका these were at that time richly populated areas ahmazas enormous species of mammals basan so consequently marsupial hekni timan mammals se tamsat compete karit ke lihaza yiman avna pura wash kadnuk mauka ke dapan at pet hasa gayi migrate to Australia yem sat marsupials ch migrate gasan towards the Australia marsupialan hund ancestor you migrate to gasan towards Australia was a very less populated region ach manz asne baki mammals titya basan ke so Australia as manz asne ancestral marsupials emis nasa osne tuta competition pe unemis face karun ke automatically daba ancestral marsupials get proliferate yimo get exploit alag alag niches yimo get exploit alag alag habitats to yim get alag alag direction in must modify aden bane rat like organisms aden bane kangaroo like organisms aden bane badal flying marsupials and so consequently this was only possible when there was less competition in the Australian region consequently as which Australia's much more than 300 kinds of marsupials basan urche rat like urche fast runners urche kulen pet rozan arboreal urche woodan urche abas manz rozan magar yiman sarni mammalan chu yiman sarni animalan chu marsupial lagil so consequently is vano ki ekis ancestral marsupials pet hasa che Australia's manz winkes gumts pada yitsa species of marsupials. So this is once again an example of adaptive radiation. This is once again an example of evolution in several directions. So let us have a quick revision. We today talked about an evolutionary phenomenon. This evolutionary phenomenon is called adaptive radiation or this is also called as divergent evolution. So far as divergent evolution is concerned, if we define it, it is evolution in several directions. When an ancestral species gives rise to multiple daughter species, the phenomenon is called divergent evolution. Divergent evolution is a godnich example about the mammals. Ancestral mammals ch tam sat paid gasan zaminas pet yen sat huge dinosaurs ch zaminas pet basan lihaza ancestral mammal yus lokut makut organism chosmut so should compel gomut to live as secretive life and but the dinosaurs extinct gaye ancestral mammals are mock ki ye kar alag alag ecological niches alag alag habitats kariye exploit lihaza ancestral mammals pet bani multiple daughter species it is fossorial it is cursorial it is volant it is aquatic number second example nears Darwin's finches yim finches as Galapagos Island chu America's north coast as ak island yos godnet kuni island pat gorgi bifurcate because of tectonic movement of plates are many multiple islander go alag longitude to alag latitude hasil automatically different environmental conditions so accordingly yim sa finches get divide ancestral Galapagos Islandic finches get divided into daughter species. Timan pyo alag alag gazan per guzar karan automatically tuhun beak structure to class structure go change. Natij draw ki tamis ancestral finch species per winkes padigums multiple daughter species of finches. This is another example for divergent evolution. Either partly as divergent evolutionist example in case of marsupials. Marsupials were produced in North America. From there they migrated to South America. Magar donway as richly populated regions that mule the marsupial and zyada wash karnuk mauke kiya. That pet gaye migrate to Australia. Australia was thinly populated at HMO alag alag ecological niches कायम करित ecological niches occupy करित अलग अलग habitats occupy करित the huge diversity of marsupials is nowadays found in Australian
continent. So consequently, ancestral marsupials pet bane multiple daughter species in the Australian continent. This is another example for adaptive radiation. So with these words, beta, we have finished with divergent evolution or adaptive radiation. We'll be soon together with yet another topic, yet another lecture. Till then, take care.